Time we have discussed about stress and strain, and I think I had given you some homework also just for the graph between stress and strain. So करा क्या आप लोगों ने? Yes, sir. या सभी ने कर लिया? चलिए कोई बात नहीं, एक बार और समझा देते हैं. So stress strain curve. Actually, this curve is very important, and it gives you the relation between stress and strain. What are the different components, the different points, the tensile stress or plastic range, elastic range. So it is nothing but just an experiment. And in this experiment, we are finding a relation between stress and strain. Stress, you know very well, the force applied. So here we have a wire of length, suppose small l, and here at the end, load is hanging. Load is hanging means we are applying force. We are applying force, that is nothing but stress. So initially, when force is zero, the length of wire remains the same. There is no change in the length of the wire. And when you increase the force or the load here, then the graph is just like this. This is suppose A point. Means from O to A, the graph is a straight line. When we have to discuss, we have to write like this. So actually first I complete the graph and then I'll discuss it. So this is like this. And then this is our breaking point, P, maximum point. This is B and this is C point. And ये O dash हो गया. And this hole is less than 1%, and it is known as permanent set. So this is known as, इस point को बोलते हैं proportional limit, and इस पूरे को हम कहते हैं इलास्टिक रेंज या फिर अपना बोल देते हैं इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर. And this B is known as yield point. SY. Okay, and then at last fracture point is also there. तो इसको हम कहते हैं ultimate stress, SE. And this is our breaking point. And from this B to E, ये होती है plastic range. And O to B इलास्टिक रेंज. ठीक है बच्चों, ये सब कुछ लिख दिया मैंने. एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली. In order to discuss the relation between stress and strain for a elastic wire or metal wire which is loaded with some weight, the curve is like this, the graph is like this, and the graph reveals the following facts. The graph reveals the following facts. So number one, अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ. ओके, सो नंबर वन क्या हुआ? इन नंबर वन,
When stress increases, then strain also increases, and from O to A, the graph is a straight line. From O to A, the graph is a straight line. So here it obeys Hooke's law. The wire from O to A obeys Hooke's law, that is, stress is directly proportional to strain. So it shows the elastic behavior. It shows the elastic behavior up to point A. And when wire is unloaded at point A, then it retraces the path from A to O, and A is known as proportional limit because here the stress is directly proportional to strain. Again, from O to A, the graph is a straight line. So it obeys Hooke's law, that is, stress directly proportional to strain. This is O to A shows elastic behavior, and A is known as proportional limit. If we unloaded the wire at point A, unloaded मतलब weight निकाल दिया, then it retraced the path from A to O, that is, it again regain its original length. Okay, then हम मानेंगे तो है नहीं, हम तो फिर वेट बढ़ाएंगे, वेट बढ़ा रहे हैं हम, देखिए स्ट्रेस. After A, if stress increases, now from A to B it is not a straight line, it is a curved portion. From A to B, it is a curved portion, and Y is known as yield point, and the stress corresponding to point B is known as yield stress, YIELD, yield stress, or yield strength भी कहते हैं कई बार. But if you unloaded the wire at point B, again it retraced the same path, that is BAO. It means this B is also known as elastic point, या elastic limit कह सकते हैं. This B point is also known as elastic limit. Elastic limit means at point B, if you unload the wire regains its original length. Then point number 3. After B, for a very small increase in the stress, there is a large increase in the strain. And if you unload the wire at point C, then it does not retrace the path CBAO, but it comes from C to O dash. And so there is a permanent increase in the length of the wire after this stress. And this increase in length of the wire is known as permanent sag. It is generally less than 1% of the original length of the wire. But this is now here. Now it is not showing elastic behavior. From O to B, we have elastic range, and now after B, plastic range starts. ये plastic range हो गई अब. Plastic range. I think you have seen a rubber band also. When you apply more stress on the rubber band, after some time, its length increases. जहाँ हम एक बार में लगा देते थे हम. So we are finding that now we have to use it for twice or thrice or 4 times, right? So again, third number पे आया. After point B, if we increase the stress, then there is a large increase in the strain, and if you unload the wire at point C, then wire does not retrace the path CBAO, but comes from C to O dash. And so there is a permanent increase in the length of the wire OO dash. And this OO dash is known as permanent sag. Point number 4. After C, for very small increase in the stress, there is a large increase in the strain. And this point D
कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी जो है उसके लिए स्ट्रेस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस. क्या कहते हैं इसको? अल्टीमेट स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेंथ. अल्टीमेट स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेंथ. एंड आफ्टर बी, without applying or without increasing any stress, the wire becomes flow. The constrictions are developed in the wire, that is waist and neck, कमर और neck. ऐसे ऐसे वायर हो जाती है पतली, थिनिंग हो जाता है, थिनिंग ऑफ वायर. वायर बिकम्स फ्लो और एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जोइंग और करके टूट जाती है अपने आप. आप देखना पॉलीथीन को खींचना, खींचते जाओगे एक पोजीशन आएगी, उसके बाद वो अपने आप ही टूट जाएगी पतली होके. एंड दिस इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक फ्लो. सो फ्रॉम O to B, this is called elastic range, and from B to E, this is known as plastic range. And at point E, the wire breaks by itself. So this is known as fracture point or breaking point. And now there is a question in your mind, why we are studying this stress strain graph? So may I tell you, we have different type of materials, and different type of materials we can discuss only on the basis of this stress and strain relationship. Types of materials. So look here very carefully. The first type of materials are ductile materials. And this is the graph of ductile material. The material in which plastic range is long, large. इसमें प्लास्टिक रेंज ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मीन्स जिनके वायर्स बनाए जा सकते हैं. द मटेरियल्स which can drawn into thin wires are known as ductile materials, and their property is known as ductility. So all metals they are ductile. अभी तो सोने के हार, तार, वायर, कॉपर के, एल्यूमिनियम वायर बन जाते हैं. सो मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ, आपको आ गया होगा. फॉर डक्टाइल मटेरियल प्लास्टिक रेंज शुड बी मोर. ये डक्टाइल का देखना बच्चों, दिस इज ये डक्टाइल मटेरियल. Plastic range is here, you know very well, it is strain, and here we have stress. Okay, then we have brittle materials. Brittle material means glass, wood, ये brittle materials होते हैं. Cast iron, ceramics, these are also brittle materials. Brittle यानी जो फोर्स लगाए टूट जाते हैं. So for brittle material, plastic range is very small and the breaking point is very close to the proportional limit or elastic point. Plastic range is very small. Here plastic range is large and here plastic range is small. So when plastic range is small, that is breaking point is very close to the elastic limit, then that material is brittle, and when you apply stress, you know very well, it breaks out. क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा कुछ? नो सर दिख रहा है. भले सर आपकी बैंडविड्थ सॉरी लो आ रही है, बाकी दिख तो रहा है क्लियरली. दिख रहा है ना? बैंडविड्थ लो क्यों आ रही है? उसमें रेड कलर आ रहा है बैंडविड्थ. नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख रहा? कई बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, क्या बात है? सर क्लियर दिख रहा है. And there is one more property you know very well, that is known as malleability. Malleability, ये पढ़ा होगा आपने. Malleability means it is the property due to which the materials which can be hammered and turned into thin sheets, इनकी शीट बन जाती है मेटल्स की. तो
उसके लिए कंप्रेस करना पड़ता है हमें. कंप्रेस मीन्स नाउ यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस इन द अपोजिट डायरेक्शन. इंक्रीज नहीं कर रहा है, आप डिक्रीज कर रहे हैं. सो दिस इज कंप्रेशन या स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन. तो ऐसा कर्व आता है इसका कहीं. दिस इज इलास्टिक लिमिट, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेशन पॉइंट और फिर शीट बन जाती है. दिस इज कंप्रेशन पॉइंट, दिस इज इलास्टिक लिमिट. तो इसको डैश बोल देता हूं मैं. दिस इज द ग्राफ फॉर दी, यू नो वेरी वेल, साइड के लिए ये अप्लाइड फोर्स आ रहा है, ये स्ट्रेन है. स्ट्रेन मतलब कंप्रेशन. After point B dash, after point that is after compression, the metal is now converted into, if you hammer it, it convert into sheets because it is not regaining its original length. और उसकी शीट बननी चालू हो जाती है. This is crushing point भी कह सकते हैं आप. क्या कह सकते हैं इसको? क्रशिंग पॉइंट. ठीक है. कंप्रेशन मैक्सिमम जगह शायद ना मिले आपको, पर क्रशिंग तो मिल ही जाएगा. एक लास्ट और है. वेट नंबर 4. दिस इज नोन एज इलास्टोमर. In elastomer, what happens if stress is applied, then their length increases or extension is much more, just like rubber. Just like rubber, in these materials what happens, the materials which can be elastically stressed up to a large values of strength, they are known as strain. They are not obeying Hooke's law. So their graph is like this. And the beautiful example of this is elastomer rubber is there. Aorta of our heart, which pumps blood from heart to the other parts of the body. अगर आप उसकी लेंथ उसको खींचने लग जाएं तो वो कई किलोमीटर लंबा हो जाएगा आयोटा. इतना ज्यादा इलास्टिक होता है. इट इज एन इलास्टोमर. एंड नाउ आई थिंक यू नो वेरी वेल, the knowledge of stress strain graph is very very important for us, and due to that we are using tires हमारे use करते हैं made up of rubbers we are using metals into thin sheets, malleability and everything we can use with the help of this. Grass brittle होता है, we are using it for many purposes. And now we are going to discuss very very important, that is applications of elasticity or applications of concept of elasticity in our general or daily life. और कुछ पॉइंट्स तो आपको पता होंगे. इलास्टिक लिमिट अभी बताई दिया मैंने आपको. इलास्टिक फटीग इज आल्सो देयर. इलास्टिक फटीग इज देयर इफ यू अप्लाई स्ट्रेस ऑन ए बॉडी अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, then its length increases and also it takes now more time to regain its original position. स्टार्टिंग में रबर बैंड को खींचो और छोड़ो तो बड़ी जल्दी आ जाता है. बचपन में छोटे बच्चे थे जब आप केजी में, तो आप निक्कर पहनते थे कि नहीं? इलास्टिक वाली मम्मी निक्कर पहना देती थी तो आप बड़े खुश होते थे. एंड आफ्टर सम टाइम्स व्हाट हैपेंस, मम्मी ने पहनाया और आप थोड़ी दूर गए तो वो निक्कर उतर जाती थी. बिकॉज इलास्टिसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इलास्टिक फटीग. याद है ना? अभी भी होता है. आपके सॉक्स होते हैं, सॉक्स ढीले हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, देखा होगा आपने. इलास्टिसिटी डिक्रीजेज, दैट इज इलास्टिक फटीग ड्यू टू. एंड आल्सो देयर इज एन इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मींस the time taken by the body to regain its original shape or size is known as elastic after effect. आपने रबर बैंड को खींचा और छोड़ा तो वो जितना टाइम लेती है, that is known as elastic after effect. And elastic after effect changes due to elastic fatigue. Previously, initially it takes less time.
and after that it will take more time. तो इसका इसी वजह से हम क्या कहते हैं, आफ्टर समटाइम्स द ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ. रेलवे के ब्रिज बने होते हैं तो उनको कहते हैं ये अनसेफ है, नए बनाओ. तो कई लोग कहते हैं अरे अरे इन सरकार को तो पैसा खाना है इसलिए नए ब्रिज बना रही है, पर ऐसा नहीं होता. बिकॉज व्हेन ट्रेन पासेस थ्रू द रेल on railway track, then length of the railway track increases, and when train passes by again it regains its original shape, original length. But due to repeatedly moving of the train or stress, for that particular value of stress now strain is more, and so maybe the bridge collapse. समझ गए आप रबर बैंड को रोज खींचते हो, चोटी में लगाते हो, एक दिन उतने ही फोर्स से खींचा और वो टूट जाता है. आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. So elasticity is very, very important in our life. So now I am going to discuss concept of elasticity, applications of concept of elasticity in our daily life. So first, diameter of cable of crane or lift. You have seen a crane and also you have seen lift also, and also you have seen a cable car. Cable car आपने देखी होगी. Cable car you know very well. जिसमें मनाली या ऐसे हम जाते हैं मसूरी, वहां पर एक ऊपर रोप पे कार होती है जो इधर से उधर ले जाती है, जिसे कहते हैं झूला, हवाई झूला, उड़न खटोला. यस सर, देखा है. और इसके हाँ, अगर आपने नहीं भी देखा हो तो उसकी पिक्चर आई थी स्पाइडरमैन, जिसमें स्पाइडरमैन में वो काट देता है और वो स्पाइडरमैन पकड़ के खड़ा रहता है कि अपनी हीरोइन को बचाऊं या फिर वो बस में बच्चे भरे हुए हैं उनको बचाऊं. वो दोनों को बचा लेता है. तो उसकी जो रोप होती है वो रोप इलास्टिसिटी के कंसेप्ट से बनाई जाती है. ऐसे नहीं कि गए जरा बाजार से एक रोप खरीद लाना और चलो लटका दिया. नो नो, we have to discuss with the help of the whatever weight is going to lift by the maximum weight is lift by the crane or lift or cable car. तो कैसे पता लगाते हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ. सर कैमरा राइट में कर दीजिए. हाँ बिल्कुल ठीक है. यस सर. Suppose the maximum weight or the maximum load lift by crane is 10 ton. 10 ton means suppose 10 to the power 4 kg. It means we need a wire which can withstand with the load of 10 to the power 4 kg. But what we are doing, we are taking a safety measure of 10. 10 का safety measure हम और लेते हैं. So with safety measure of 10, maximum load is 10 to the power 4 into 10, that is 10 to the power 5 kg. इतना कि suppose you have a lift, you have a crane, and in the lift it carries maximum 10 to the power 4 kg weight. लेकिन मान लो उसके अंदर मेरे जैसे लोग चले गए तो वे 10 to the power 4 से तो 10 to the power और ज्यादा बढ़ गया, तो लिफ्ट भी टूट जाएगी और सारे के सारे लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे. So why we are always taking a safety measure and we are not taking 10 to the power 4 maximum weight, maximum load, we are taking 10 to the power 5 kg. ये तो हमारा मास हो गया. क्या हो गया? मास. And you know very well we are using steel wire, and the steel wire
इलास्टिक लिमिट यंग्स मॉडुलस इज 3 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसे कहते हैं ब्रेकिंग लोड, या आप कुछ भी और कह सकते हो, और कोई नाम अगर दिया हो तो दिया नहीं है, वही अल्टीमेट स्ट्रेस ही है। अल्टीमेट stress for steel wire is 3 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Correct? Now simple formula I am going to apply. आपके जो लोग होने चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, या इसके इक्वल होना चाहिए। we know ultimate stress. So stress is force upon area. Force is mg and this is pi r square. So ultimate stress is 3 into 10 to the power 8. Mass is 10 to the power 5. G is 9.8. Pi is 3.14 and this is r square. Okay बच्चों? So r यहाँ पर आता है आपका 3.2 सेंटीमीटर। If you solve it, मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। एक्चुअली मैं कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छा हूँ, बड़ी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। आप कहेंगे मीटर में क्या आएगा? 0.032 मीटर, क्योंकि पहले मीटर में आएगा, देन इट विल बी इन सेंटीमीटर। सो वी नीड ए वायर ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर in order to uplift the load of 10 to the power 5 kg. But we are not taking a single wire, because if we are taking a single wire, then what happens? Single wire is just like a rod. ये rod हो गई, अगर ये rod हो गई तो इसमें flexibility नहीं होगी, and also there is less strength. So what we are going to do? We are not making a rod whose radius is 3.2 centimeter, not taking a wire of radius this. We are taking many thin wires. Whose total radius is equal to the 3.2 centimeter, and then they braided together. जैसे वायर होती है, आपने वायर्स देखी होंगी, तो मैं ऐसी एक सिंगल वायर नहीं ले रहा, इसकी जगह बहुत पतले पतले वायर लेता हूँ। आप किसी वायर को छीलो तो उसमें पतले पतले वायर निकलते हैं। कॉपर के वायर निकलते, बहुत से निकलते हैं। हाँ, फिर उनको हम आपस में ब्रेडेड कर देते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेंथ। जैसे कोई लड़के ने बाल लंबे कर लिए और वो चोटी बनाता है, तो चोटी में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन सबको एक साथ गूंथ लिया, तो उस सबकी रेडियस होनी चाहिए 3.2। So we consider, or we are taking thin wires and braid it together to impart flexibility and strength. I think you are getting my point. तो देखिए, आपको concept of elasticity, it will give you, मान लीजिए आपको ज्यादा लोड उठाना, ट्रक उठाना, तो you can find radius. So directly, if you want, you can write the formula also. Sir, this side. So, okay. Yes, sir. Now, one more application is there. Second application. Sir, पर वो वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता होगा ना? हाँ, स्टील वायर ले रहे हैं हम तो। We are taking steel wire. स्टील सबसे ज्यादा मजबूत है, वही लेंगे। So second, एक प्रोसेस होती है, बकलिंग होती है। बकलिंग क्या होता है बताता हूँ आपको। When girders are there or beams are there, then there is a depression comes in the beam due to its load itself, due to its weight itself, अपने आप बेंड हो जाती है। The bending of a beam, लिखना चाहो तो लिख लो। The bending of a beam from the middle, by itself due to its load,
is known as buckling. Is known as buckling. Sir, can you repeat from starting? हाँ कर दूंगा, एक मिनट जरा डायग्राम बनाऊं. डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है. आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग. सर मैं कर दूं डिक्टेट? हाँ हाँ तुम जब तक लिखवा दो इनको. The bending of a beam from the middle by itself due to its load Due to its weight. is known as Due to its weight. is known as buckling. हाँ. ये देखिए, ये होती है ब्रेथ और ये होती है डेप्थ. दिस इज लेंथ. ओके, दिस इज a beam and it is actually found on the bridges. और ब्रिज अपने आप ड्यू टू द लोड ऑफ द कार्स, ड्यू टू द व्हीकल्स, दे डिप्रेस्ड इटसेल्फ. हमारे घर में भी बीम लगा होता है, वो भी डिप्रेस हो जाते हैं अपने आप. एंगल्स लगे होते हैं, एंगल्स आपने देखे होंगे. सो जनरली एंगल्स आर लाइक दिस और इसमें अपने आप डिप्रेशन आ जाता है. इसे कहते हैं डेल्टा. एंड दिस बेंडिंग इज नोन एज बकलिंग. This delta is depression and delta is given by, आप लिखना चाहें तो लिख ले, delta is given by WL cube upon 4y BD cube. W means weight, L मात्रक length, Young's modulus, B breadth and D is depth. तो अब मैं आपको बकलिंग फिर से समझाता हूं कि बकलिंग है क्या चीज. व्हाट इज बकलिंग? A beam is bent by itself due to its weight. A beam is bent by itself from the middle due to its weight, and this process of bending of beam by itself due to its own weight is known as buckling. And a depression is seen at the middle, and that depression is given by delta. This delta is WL cube upon 4y BD cube. And in order to check buckling, from here it is clear that delta is inversely proportional to y, inversely proportional to b, and inversely proportional to d cube. It means if we increase y, b and d, then delta decreases. तो हमने b को बढ़ाने की कोशिश की, y को भी बढ़ाया. y तो बढ़ा नहीं सकते बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल. एंड वी फाइंड दैट डेल्टा में बहुत चेंज नहीं आया. देन वी इंक्रीज डेप्थ. हमने डेप्थ बढ़ाई, तो डेप्थ बढ़ाने में फायदा हुआ. बताओ क्यों? बिकॉज इट इज डी क्यूब. अगर आपने 2 बढ़ाई तो 2 8 टाइम्स बढ़ गई, एंड सो इट डिक्रीजेज 8 टाइम्स. इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग डेप्थ, by increasing depth, delta is decreases appreciably. And so why we are using beams or girders of more depth. Breadth is less but depth is more. The famous example is railway track. आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा. रेलवे ट्रैक इज जस्ट एज ए शेप ऑफ आई. आई का शेप होता है उसमें, देखना. ये देखो ऐसा ऐसा शेप होता है. पूरा अच्छा नहीं बना इतना. ये फ्रिंज होता है ऊपर, ये वाला, ये ज्यादा बड़ा होता है. देखो
just like this. Depth is, ये देखो, depth is more and breadth is less. So this is the concept why we are using less breadth and more depth in girders, in beams, because if depth is more, then delta decreases and so buckling is reduced. So buckling can be reduced using more depth, Okay. Also, ये मिटा दूं? नो सर वेट. ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये वाला ये मैं भूल गया, पहले अच्छा बनाता था. फिर से देखता हूँ मैं. ये तो सही था. हाँ ठीक है, थोड़ा सा. रेलवे ट्रैक आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, द मोर वेट इज ओवर द ऑन दी अपर फ्लेंज पूरा वेट सपोर्ट कर लेता है. ओके. एक और इलास्टिसिटी बहुत ही बढ़िया चीज बताती है. सपोज यू नो ए प्लैनेट एंड यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन दैट प्लैनेट. तो इलास्टिसिटी आपको बता देता है. अर्थ पे देखो बताते हैं, अपन अर्थ पे निकालते हैं. सो the maximum height of a mountain, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना. मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन ए प्लैनेट. If you have to find maximum height of a mountain on a planet, then you can use the concept of elasticity. So ये मान लो माउंटेन है and this is earth. तो ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? अंदर इसलिए नहीं जा रहा because whatever pressure is exerted at the base or shearing stress by the mountain, that will be equal or maybe less than the ultimate stress. नहीं तो ये अंदर चला जाता ना. And you know very well it exerting a pressure, and pressure you know that H rho g. Height, this is height of mountain, suppose H max. Okay. So the maximum pressure exerted by should be less than or equal to the ultimate stress. So for